Good morning, my dear friends. I am Vijendra Jain with this new video of chapter number 1, Number System of Standard 9. In previous video, what we have seen, we represent the real numbers on number line. Now today, in this video, we are going to see operations on real numbers. In this video, what we are going to see, operations on real number. Operations on real numbers के लिए I have already told you all कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं. इवन, ऑड, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, ये सारे रियल नंबर्स हैं. इसके साथ साथ रैशनल और इरेशनल वो भी रियल नंबर्स हैं. सो नाउ टुडे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग कि जब हम ऑपरेशंस मींस व्हाट, ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division. These are the operations which we are going to do on real number. Is that clear? So now first I am taking rational number and then irrational number. Real numbers में यहाँ पर दो चीजें लेनी है, एक rational and irrational. Rational means in the form of a upon b and irrational like root 2, root 3, etc. are the irrational numbers. So first of all, see, when we multiply, see, I'm just using the sign. When we add, subtract, multiply and divide, when we add, subtract, multiply and divide rational number with rational number. क्या बोल रहा हूं मैं? When we add, subtract, multiply and divide rational number with rational number, see what happens. Suppose rational number means I just multiply 1 upon 2 by 3 upon 2. 1 upon 2 is rational number, 3 upon 2 is also rational number. So here the result is 3 upon 4. So 3 upon 4 is also rational. It means rational multiply rational will gives rational. Suppose number 1. Number 2, 1 upon 2 plus 3 upon 2. 1 upon 2 plus 3 upon 2. So what is going to happen? 1 plus 3 upon 2. So this is also 4 upon 2. So 2 is also rational. It means when we add, when we take plus of rational with rational will gives rational. Now next, third, 3 upon 2 minus 1 upon 2. 3 upon 2 is rational and 1 upon 2 is also rational. So 2, 3 minus 1, 2 upon 2, 1 is also rational. Next, number 4, 4 upon 5 divided by 3 upon 5. जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो it also will give rational. कैसे? तो 4 upon 5 multiply 5 upon 3. So here 5 I cancel 4 upon 3. It means what it proves. ये क्या बता रहा है कि when we take addition of rational number with rational number, it will always rational. When we subtraction, when we take subtraction from rational to rational, gives always rational number. Multiplication may be same. The product of two rational number is rational, and division by rational with rational is also rational numbers. Now we just take rational with irrational. Rational with what I am only change when we add, subtract, multiply and divide rational number with irrational number. See, when I multiply 2 with root 2, so it will give 2 root 2. This is irrational. When I
add 2 plus root 2, it also root 2 is irrational, तो ये भी क्या देगा, irrational number. 2 minus root 2 is also gives irrational. And last 2 divided by root 2 will also gives irrational. इट मींस कि जब हम रैशनल को रैशनल में इरेशनल ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है. इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स सी सम एक्सरसाइज सम्स. सो अगेन आई रिपीट द ऑपरेशंस के व्हेन वी टेक एडिशन ऑफ रैशनल विद रैशनल विल गिव्स रैशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल विद रैशनल विल गिव्स रैशनल, मल्टीप्लाई में भी रैशनल का रैशनल से रैशनल नंबर ही मिलेगा और डिवाइड में भी वही मिलेगा. इरेशनल में हमको सब इरेशनल मिलेगा. सी तो नाउ इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 is given. Exercise I think 1.5 is there. Exercise 1.5. In question number 1 is given what? Check whether the following numbers are rational or irrational, in which I am writing over here some numbers. That is 7 root 5. Clear what I am writing over here? 7 root 5. Second 7 upon root 5. Then third 2 plus root 21. Clear? 4 pi minus 2. Clear? The first is 7 root 5. 2 upon root 5, 7 upon root 5, 2 plus root 21, pi minus 2, 2 minus root 5. See, I am writing these numbers. हमको यहाँ पर चेक करना है कि these are rational और irrational. 6 is 3 plus root 23 minus root 23. 7. Question number 7. This is 3 plus root 23 minus 23. 2 root 7 upon 7 root 7. Clear? Here I am writing 2 root 7 upon 7 root 7. Next number it is 1 upon root 2. Again I am repeating 1 upon root 2. And question number 9, that is 2 pi. So now the answers. Question number 1. Question number 1 is given what? Check whether the following numbers are rational or irrational. So here root 5 is irrational. So it is irrational. Here it is also irrational. Root 21 is irrational. And in first we have seen pi. Pi is irrational. So जहां भी pi है वो सब irrational numbers हैं. This is also irrational number. Here this is also. But in this number जब हम इसको simplify करेंगे 3 plus root 23 minus root 23, तो root 23 में से root 23 जाएगा तो it will be 0 and the answer is 3. So it is rational. It is rational. यहाँ पर root 7 से root 7 cancel हो जाएगा तो it is rational. यहाँ पर root 2 is irrational. So is that clear, my dear students? How we identify when the number which are given in root कि जिनका हम square root find नहीं कर सकते तो ये irrational numbers हैं. So this is question number 1 of exercise 1.5, in which whether the numbers are rational or irrational we are going to see. Now question number 2. See. Now question number 2 is क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सिंप्लीफाई करना है. सी क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2.
So here we use that properties which we have seen early. यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स, बट द इससे पहले हमने देखा कि जब हम रैशनल को इरेशनल से या रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होता है. तो फर्स्ट आई मल्टीप्लाई 3 with this bracket and then root 2 with this bracket. Is that clear? So 3 2s are 6, 3 multiply under root 2, 3 root 2, 2 multiply root 2 is 2 root 2 and root 2 multiply root 2. So that is 2 only, because जब भी रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर से होता है तो इट विल बी रूट 2 स्क्वायर. दैट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कट कर देता है एंड आंसर विल बी द सेम नंबर विदाउट रूट. ओके, सो हियर these are the like terms. So what is going to happen? 3 plus 2, 5 root 2 plus 2. Again these are the like terms. So 8 plus 5 root 2 is the answer. So this is the simplification of multiply of irrational with irrational. ये भी हमको देखो irrational ही मिला. Now question number 2 is given what? See, maybe these are given in the examples. Question number 2, 3 plus root 3 and 3 minus root 3. In earlier class we have seen the difference between two perfect square. हमने इससे earlier class में difference between two perfect square में a square minus b square is equal to a minus b, a plus b वाला फॉर्मूला देखा है. तो यहाँ पर हम उसको रिवर्स करेंगे. यहाँ पर a plus b, a minus b दिया है. It means 3 whole square minus root 3 whole square. So here what happened? 3 square 9 or this will be minus 3. So the answer is 6. So this is the way to simplify the given numbers. Is that clear? Next. Question number 3. Question number 3 is root 5 plus root 2 whole square. तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a plus b whole square. We just use this identity. What is a square plus 2ab plus b square? So in which here the first a is equal to root 5 and b is root 2. तो सबसे पहले a square means root 5 whole square, 2ab means 2 multiply 5 multiply root 2 and in last root 2 whole square. Is that clear, my dear friends? Here root 5 whole square 5, 5 2s are 10, that means 2 root 10 and root 2 square is 2. 5 and 2 will be 7 plus 2 root 10. So this is your answer. Clear? Next is given root 5 plus root 2 and root 5 minus root 2. So here again we use that property a minus b and a plus b. A minus b and a plus b will be what? A square minus b square. So यहाँ पर क्या होगा? root 5 whole square plus root 2 whole square. Sorry, minus. Difference between two perfect square. So that is 5 minus 2 will be 3. So these are the questions which we simplify. Next question. Next question is root 3 plus root 7 whole square. Question number 5. Root 3 plus root 7 whole square. So again we use what? The property, the expansion a plus b whole square. So here root 3 whole square plus 2ab. 2 root 3 is in place of a, root 7 is in place of b and plus root 7 whole square. So here again I repeat, root 3 whole square will be 3 plus 2 root 21 and plus 7. So what is going to be here? 10 plus 2 root 21. So by this method you just solve the simplification
solutions. Now question number 6. Question number 6 is 5 plus root 7 and 2 plus root 5. 5 plus root 7, 2 plus root 5. Again we do the multiplication of two bracket. So जैसा कि हमने इससे पहले वाले सम में किया था, डायरेक्ट करते हैं 5 2 जा 10. This will be 5 root 5 plus root 7 multiplied 2 will be 2 root 7 and root 7 multiplied root 5 will be root 35. So this is your simplification. This is also irrational. Now next 5 root 5 multiply 5 plus root 5 and 5 minus root 5. So again we use that property a minus b, a plus b. Here 5 whole square minus root 5 whole square. So 25 minus 5 will be 20. So I hope all you understand the questions what I want to explain over here, the operations on real numbers. Clear? Now अब यहां पर हमने सीखा क्या एक्चुअली. नंबर 1 रूट ए प्लस रूट बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हम इसी वे में ओपन करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इट मींस व्हाट? रूट a होल स्क्वायर 2ab 2 रूट a रूट b प्लस रूट b होल स्क्वायर. अब मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, रूट का जो स्क्वायर होता है वो रूट को कैंसिल कर देता है, तो इट विल बी a प्लस 2 रूट ab प्लस b. सेम टू सेम फॉर माइनस रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर इज रूट a होल स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b प्लस रूट b होल स्क्वायर. सो अगेन root is cancelled by square, so a minus 2 root ab plus b. मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम टू सेम कि जब हम रूट a प्लस रूट b एंड रूट a माइनस रूट b इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से रूट a होल स्क्वायर माइनस रूट b होल स्क्वायर. And the properties are also given in the textbook. So by the uses of this we just simplify the questions. Okay, now one more thing is what? Rationalize the denominator. अब rationalize the denominator, pay attention over here. Okay, I am telling rationalize the denominator. See, again I am repeating, rationalize the denominator. Rationalize the denominator. Rationalize denominator का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जब अपॉन में सपोज आई एम टेकिंग 1 अपॉन रूट 7, इसको हमें रैशनलाइज करना है. इसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इज गिवन व्हाट? रूट 7. डिनोमिनेटर इज गिवन व्हाट? रूट 7. इसको रैशनलाइज करना है तो हम सेम नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज 1 upon root 7 multiply root 7 upon root 7. So it will be root 7 upon 7. This is the answer. इसको हम बोलते हैं rationalize, denominator को rationalize करना. इसके बाद one more question I am taking. See, that is very important part because in 10th standard you will also see the same sums. 1 upon रूट 7 माइनस रूट 6. अब हमको इसको भी रैशनलाइज करना है. इसको भी हम क्या करेंगे? रैशनलाइज. अब जब डिनोमिनेटर में इस तरह का इरेशनल नंबर हो तो हम इसका अपोजिट साइन वाला इरेशनल नंबर लेते हैं. सपोज रूट 7 माइनस रूट 6 इज गिवन ना, तो हम यहाँ पर रूट 7 प्लस रूट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर दैट प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी डन. सी, ऊपर तो यही रहेगा, न्यूमरेटर में 7 प्लस रूट 6, यहाँ पर रूट 7 होल स्क्वायर और रूट माइनस रूट 6 होल स्क्वायर. स्क्वायर
root cancel, so 7 root 7 plus root 6 upon 7 minus 6, so it will be what, root 7 plus root 6. Okay, my dear students, so this is the operations, these are the operations on real numbers in which we just look the multiply of rational with rational, rational with irrational, or rationalize the denominator. Now one more question is given, okay, represent root 9.3 on number line, so it we will see in the next video, because it also takes some time. Or the most important part, okay, when you will see the video, always be be always with टेक्स्ट बुक. क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक होगी तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड टॉपिक एंड चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ओके, सो आई होप कि टुडे यू अंडरस्टैंड ऑल दिस व्हाट आई एक्सप्लेन. एंड नाउ होमवर्क, examples and exercise 1.5 you will have to do in the notebooks. Okay, thank you very much.